पैनल्स लगे हुए हैं 440 न्यूटन और यहाँ आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। -22 minutes. Request all stations change over to channel 2 at T-21 minutes. No confirmation सभी is परीक्षण needed to control. पूर्ण होने के पश्चात MCC confirms data from chain 2. इस समुच्चय को RSC confirms data from chain 2. पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर अंतरिक्ष यान के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। अब पूर्णतः तैयार LVM इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। Change over to channel 2. Rody Roger. RSO to ROD and safety systems are ready. ROD Roger. अब इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी की जाएगी। संयोजित और तैयार LVM-3 और 4 रॉकेट आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहां संपन्न किया जाता है। LVM-3 M4 rocket standing majestically against a picturesque background, the second launch pad. LVM-3 rocket will fly for the 7th launch today. 43.5 meters tall and 642 tons heavy launch vehicle has been operationalized after an experimental and 2 developmental missions. Mission executives on your screen, that's the spacecraft director and associate spacecraft director. LVM-3 is India's largest and heaviest launch vehicle ferrying Indian and international customer satellites. Director to Mission Director, LVM-3 M4 launch vehicle is ready for the Chandrayan 3 mission. Mission Director Roger. Mission Director to अब हम उड़ान से 19 मिनट 12 सेकंड की दूरी पर Mission Director. All necessary clearances are obtained for the launch of LVM-3 M4 Chandrayan 3 mission. Mission Readiness Review Committee and Launch Authorization Board have already given authorization for the launch of LVM-3 M4 Chandrayan 3 mission. Based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft and TTC confirmed by respective mission executives and the prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch 18 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time today the 14th July 2023 from second launch pad of SDSC Sharp. Control Roger. All stations for launch. जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी। मिशन डायरेक्टर ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर LS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। On screens, you have just watched Mission Director Shri Mohan Kumar being cleared for range, launch vehicles, spacecraft, and tracking. The automatic launch sequence is scheduled to begin at T-14 minutes 30 seconds, as a part of which the most critical control system elements are checked for the launch vehicle. -17 minutes.
Very close to the launch time, control will be passed on to the onboard Roger. computers. VLCC to LCC to do not. Timing व्यूअर्स control गैलरी with दर्शकों से external खचाखच भरी हुई। VLCC Roger. बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। During countdown, the launch vehicle stages are serviced with propellants. Gas bottles meant for stage operations are charged. Cryogenic propellants. SDA servers activated. MC confirms data from Sharman. अभी कंफर्म किया गया है। व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजू सी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अब यह लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इसका मतलब ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है। We are very close to the launch, and the day of launch wind biasing data is fed to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle throughout this mission. Number 465, request CGS to confirm supply of GN2 to cryo. Moon, this familiar object in the night sky, has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayan-3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it. Rocket LVM-3. The Chandrayan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the -12 Moon. minutes. This region is of intense interest. Chandrayan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the Moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the Moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition surface using X-rays and laser respectively.
while the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayan 3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it, and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayan 3. 10 minutes. आपके सामने हैं इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Chandrayan 3 has two predecessors with destination moon as their mission objective. Chandrayan 1, launched by PSLV C11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayan 1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions. Chandrayan 2, launched by LVM-3M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. इस प्रकार है, सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayan 3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander, and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent, and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayan spacecraft moves closer to the moon. The Chandrayan 3 in its sixth phase carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit phase takes place.
फ्लाइट कोएफिशिएंट लोडिंग आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतज़ार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. Most of you might recall the Chandrayan 2 mission MC confirms radar and the data. intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of Moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes. Gaining from business Pyro through and wall extensive battery. ground tests and simulation. ऑनबोर्ड कंप्यूटर के फ्लाइट मोड ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक्स का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। प्री-फ्लाइट प्रेशराइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन टैंक कमेंस्ड S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। -1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -45 seconds. -50 seconds. ऑल सीक्वेंसेस आर्म्ड स्टेज रेडी -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open MOV 79 -33 open seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VHPP open -20 seconds.
minus 15, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. बूस्टर्स का L1 turn stage ignited. प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart L1 from turn the stage strap-ons, performance normal. the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic Earth storable liquid Guidance propellants initiated. UH-25 and N204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L1 turn stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L1 turn stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N204 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L1 turn stage thrust cut off and separated to C-25 ignition command. 25
ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid. Present altitude Stage is performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। landing spacecraft Chandrayan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides